total of 20 teams have been constituted by Mumbai Police to apprehend the suspect of who stabbed Bollywood actor Saif Ali Khan at his home in Mumbai's posh Bandra West neighborhood early Thursday morning. What happened next? A separate team has also been formed by Mumbai Crime Branch. The teams have been assigned separate roles. Assistance of technical surveillance is being tapped. Teams, in fact, have been activated based on human intelligence. The route through which the suspect escaped is also being closely monitored. In fact, you are looking at the CCTV footage that we have got hold of. Eliama Philip, a nurse caring for Saif Ali Khan's 4-year-old Jehangir, recounted the attack incident in her statement to the police and in fact said that the man demanded ₹1 crore when he was confronted. As per the complaint, the intruder was around 35 to 40 years old. CCTV footage obtained by the police showed the man escaping through the staircase. I can identify the accused if I see him again, Philip has said this in that statement to the cops. Now, Bollywood actor Saif Ali Khan was stabbed 6 times in his Bandra home by an intruder late last night. The attacker, whose first image is already out, reportedly entered the building compound by scaling a wall, accessed the actor's apartment using a fire escape, and confronted Saif Ali Khan after being spotted by the house help. In the ensuing fight, the intruder stabbed him multiple times before fleeing undetected. Now, one of the attacker was also caught on the CCTV when he was climbing down the stairs. And according to the sources, the attacker first entered Taimur's room where he got into an altercation with 2 maids. Reports are now coming in that CCTV inside Taimur's room was not working. The attacker then reportedly demanded ₹1 crore extortion money. The attacker entered through stairs and then cut the pigeon net to enter Taimur's room as well. Now let's talk about how far the treatment for Saif Ali Khan has reached. We are learning that Saif Ali Khan is currently in a stable condition after undergoing the emergency surgery for a severe spinal injury at Lilavati Hospital. We have our reporter Govind joining us on the broadcast early this morning. Govind, a very good morning to you. What more details have you picked up? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी क्या-क्या हमें बताया है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज उस आदमी के बारे में निकल के आ चुकी है जिसे वो सीढ़ियों से उतर के निकल रहा है, तो चेहरा देखा जा सकता है, तो अभी तक उसके बारे में कुछ जानकारी बरामद हो पाई है? जी हाँ, बता दें कि करीब 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। सैफ अली खान पर हमला करने वाले हमलावर को पुलिस ने अभी तक डिटेन नहीं किया है, इस तरह की जानकारी आ रही है। लेकिन हमलावर की पहचान हो चुकी है, हमलावर कहाँ रहता है उसकी भी पुलिस ने पूरी डिटेल्स निकाली है। करीब 20 से ज़्यादा मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम तैयार की गई इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। आरोपी तक पहुंचने के लिए पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन बता दें कि पुलिस के सामने अभी भी कई ऐसे सवाल उपस्थित हो रहे हैं जिसके जवाब ढूंढने के लिए लगातार मुंबई पुलिस की टीम मदद ले रही है, काम कर रही है। बता दें अभी सुबह में जो सैफ अली खान की सोसाइटी की साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, उनको इस बांद्रा पुलिस स्टेशन में लाया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कल और आज मिलाकर 2 दिन में करीब 12 से 15 लोगों की इस मामले में पुलिस ने स्टेटमेंट दर्ज कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चोर है वह इतने आसानी से सैफ अली खान के घर में कैसे पहुंचा और सिर्फ उसका एक सीसीटीवी फुटेज बाहर आया है। क्या वह जाते हुए बाकी सीसीटीवी कैमरे में नहीं दिखा था या आते हुए क्यों नहीं दिखा था? क्या इसमें और भी कोई चोर के साथ शामिल है? कोई प्लानिंग की गई थी? इसके पीछे की कहानी क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जो है मुंबई पुलिस की टीम तलाश रही है, ढूंढ रही है। लेकिन अभी तक का जो अपडेट है इस केस में, फिलहाल पुलिस के हाथ चोर नहीं लगा है। मेरी मुंबई पुलिस के अधिकारियों से बात हुई, उनका कहना है कि बहुत ही जल्द आज हो सकता है कि जो सैफ अली खान पर हमला करने वाला हमलावर है उसको लेकर एक बड़ा खुलासा आज हो सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि मुंबई पुलिस कब तक इस चोर को पकड़ने में, हमलावर को पकड़ने में कामयाब होती है। फिलहाल सैफ अली खान की जो तबीयत है अभी बिल्कुल ही ठीक है। आज उनको जनरल वार्ड में
शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद बांद्रा पुलिस उनका बयान भी दर्ज कर सकती है। बिल्कुल गोविंद, आप हमें वो सारी जानकारी जब दे रहे हैं तब आपने एक बहुत अहम चीज़ वहाँ पे नोट करवाई है हमारे व्यूअर्स को कि वो इतनी आसानी से घर के अंदर घुसे कैसे, और सीढ़ियाँ उतरते टाइप सिर्फ एक ही सीसीटीवी फुटेज क्यों बरामद हुआ है, जबकि हम जानते हैं कि सैफ अली खान शायद 10वें मंजिल पे रहते हैं उस बिल्डिंग में। इसके अलावा क्योंकि हमें ये भी जानने में आ रहा है कि उनके घर में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी सैफ अली खान के, उनसे भी पूछताछ की गई है। उन पूछताछ में क्या ऐसे अहम मुद्दे हैं जो बाहर निकल कर आ रहे हैं और उन पे क्या शक जाहिर किया जा रहा है? देखिए, कल से अब तक करीब उनके घर के 4 स्टाफ की पुलिस ने स्टेटमेंट दर्ज किया है, जिसमें जो उनकी मेड है उन्होंने कहा था कि जब सबसे पहले वो चोर के सामने आई थी, जब उसको देखा था तो उन्होंने उससे पूछा था कि तुमको क्या चाहिए, क्यों आए हो? तो उसने कहा था कि हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए, 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। उसके अलावा जो और उनके घर में काम करने वाले स्टाफ है, 3 लोगों को भी पुलिस ने डिटेन किया है और सभी से लगातार पूछताछ पुलिस का जारी है। बता दें कि सैफ अली खान के घर में जो जानकारी मिली है, टोटल 33 लोग काम करते हैं, जिसमें से 6 ड्राइवर है और 10 बॉडीगार्ड है, जो 24 घंटा सैफ अली खान के सिक्योरिटी में और सैफ अली खान के घर के आसपास रहते हैं, उनकी सुरक्षा में उनके घर के कामकाज को देखते हैं। उसके बावजूद भी इस तरह का बड़ा हादसा होना, उनके घर तक पहुंचना, उनके बेडरूम तक पहुंचना, बहुत सारे प्रश्न खड़े करते हैं। यहाँ तक कि जो उनकी सोसाइटी है वो भी हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, उसमें ऐसे कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, सिक्योरिटी रहती है, सीसीटीवी कैमरेज लगाए हुए हैं। उसके बाद भी यह हादसा हुआ, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है और लगातार पुलिस जो उनके जो घर में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनसे अभी भी पूछताछ कर रही है। आज सुबह ही उनके सोसाइटी में साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को भी पुलिस स्टेशन में लाया गया है और उनसे भी इस पूरे मामले में, आरोपी के बारे में या फिर जो भी घटना हुई है, इन तमाम चीज़ों की पूछताछ की जा रही है। जी बिल्कुल गोविंद, और क्योंकि कल आप हमारे लिए एक रिपोर्ट लेके आए थे सैफ अली खान के घर के बाहर से, हमने देखा वहाँ पे कि सिक्योरिटी कैसी हो रखी है। अगर आप हमें और बता सकें कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट इस मौके पे अभी हॉस्पिटल के आसपास और सैफ अली खान के घर के आसपास किस तरीके से बढ़ा दी गई है? बता दें कि घटना के बाद से ही सैफ अली खान के घर के पास मुंबई पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो क्राइम ब्रांच के जवान हैं वो भी वहां पे तैनात हैं और तैनात ही नहीं है बल्कि इस पूरे मामले में नज़र बनाए हुए हैं। पूरे सोसाइटी के पूरे बिल्डिंग की एक एक कोने की वीडियोग्राफी की गई है, एक एक पार्ट्स की जांच किए जा रहे हैं। जो सोसाइटी में बाहर से आने वाले लोग हैं, जाने वाले लोग हैं, हर रोज जो काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर्स की एंट्री होती है, उन तमाम गेट की या फिर जो लोग हैं सभी से पूछताछ करिए। हॉस्पिटल में मुंबई पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं, हॉस्पिटल के बाहर कड़ी सुरक्षा है और इस वक्त मैं जिस पुलिस स्टेशन में हूँ यह वही बांद्रा पुलिस स्टेशन है, जिस पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जो मुंबई पुलिस के डीसीपी और एडिशनल सीपी रैंक के अधिकारी है वह इस मामले की जांच कर रहे हैं और कल से ही वह पुलिस स्टेशन के आसपास ही ठहरे हुए हैं, क्योंकि अभी तक आरोपी के पकड़े जाने की कोई खबर नहीं है। तो सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी अलर्ट मोड पे है। सिक्योरिटी के साथ साथ मुंबई पुलिस की करीब 20 से ज़्यादा टीमें इस मामले की जांच कर रही है, आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि आज मुंबई पुलिस आरोपी को लेकर और इस पूरी घटना को लेकर एक बड़ा जो खुलासा है वो मीडिया के सामने रख सकती है। गोविंद, हमसे ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। My colleague Kabir Naqvi also spoke to actor Gaurav Chopra about how the intruder managed to bypass the high-level security. Take a look at the conversation both of them had. Does this make you feel unsafe or, rethink your own security arrangements? If you could help the viewers, if it doesn't put your own security, in jeopardy, could you help the viewers understand what kind of arrangements you particularly have in place or what actors go through? No, let me be absolutely honest about this because to be diplomatic about something so sensitive would be Highly appreciate that, Gaurav. Highly appreciate that. The whole purpose of me being here would be futile then. I don't belong to that category of stardom where I have to worry as much. But
even at my level, no week goes by when somebody or the other comes by or tries to find out from your, the security guards that you're building, or leaves flowers or messages. That happens every once in a while. And sometimes it's endearing, sometimes it crosses that line a little bit, and you worry, and then you get a little protective. Answering your question predominantly, yes, it does bring in a thought to your mind saying, you know, I go for an event, and from the time that I dress up and leave and reach the event and I come back, everything gets documented. Everything is put out on social media. My own PR team sometimes is doing that. And we'll all have to rethink this. And like I must underline again, I don't belong to that level of, being popular, and I'm not that big a star as the people that we're talking about. But having said so, their lives are, I'm sure all of them are thinking about this, and all of them should be taking the necessary sort of precautions and making the changes that they ought to be making after something like this happens. It's not so much a question of one actor being targeted. This will spur ideas in people's minds. This will give them motivation and encouragement. And that strata of society that sees this as an opportunity to attack, extort, make quick money, um, will jump at the opportunity now. Also, former DGP of Uttar Pradesh answers if Bandra has now turned into a new safe haven for attacks. Take a look at that conversation as well. Now we're learning that the accused, he went straight into the room where Taimur was sleeping with two employees. He hushed up the female employees over there, asking him to remain shut, demanded 1 crore rupees. That's when the female employee screamed and the altercation entirely began. When you were looking at these developments right in the morning, of course, like Mr. Chintamani pointed out, some of those sketchy details came through. People started asking those questions to themselves. We were having a blatant discussion here in the newsroom as well. All of these aspects does come through. The brain starts working. What was going through your mind? Because now we're again learning about that possible extortion angle, and that the accused straight away went into Taimur's room. There could be several of those other cases that could come about as well. How are you looking at these developments? Mr. Kabir, look at the dress up, look at the manner in which this man, the accused, has prepared himself, his shoes, his gait, and of course a backpack. The very fact that he has done a recce of the premises is a foregone conclusion. Having done the recce, he knew that he had to access. It is anybody's guess that somebody as Saif Ali Khan would have pockets deep enough to offer 1 crore of rupees at given point of time. That is loose change for people like Saif. Now, the man enters in a brazen manner. He accosts the maidservant. But I think anybody would be in a fool's paradise to know that the maidservant can give those 1 crore and not Saif Ali Khan. In any case, he was fully prepared because he had that knife. It remains to be seen whether he had any other firearm or any other weapon with him. That, of course, when the interrogation happens of the man and the history sheet and his earlier criminal antecedents are checked up, we would know what his criminal antecedents are, and the police would be knowing that. Now, coming to the fact that he made the entry, he had access into the floor, he did a recce of the premises, managed the fire escape to reach the Saif Ali's flat, and then accosted the maidservant. This is where he got confronted by Saif Ali Khan, and the Saif Ali Khan, of course, in the melee, got stabbed. But the fact of the matter is that there has to be some inside information, complicity or carelessness, or both. When I say it's complicity or carelessness, I would give 60 marks of complicity and 40 marks to carelessness, and add up to the fact that this man, look at the manner in which he's prepared himself. He's looking like a caged cat, like a cat like eyes moving here and there, and the agility with which he is moving, his jogging shoes, his track pants, he's come fully prepared to run for his life after the loot.